bank to discount receipt. Okay. So split it up. There are two entries over here, Shantanu to bank and Shantanu to discount, right? Where will you write Shantanu to bank? Shantanu to bank का record होगा. In which book will you record? In the credit side. Shantanu to bank will come in this book only, cash book. On the credit side, buy Shantanu. Shantanu में to bank. Bank में buy Shantanu account on the credit side. Bank column 19,800. Okay, bank column 19,800. This is being check paid to Shantanu. Being check paid to Shantanu. What about Shantanu to discount receipt? What about Shantanu to discount receipt? Which book it should be recorded? Journal proper. Journal proper. So all of you go and write the note. Transaction on 9th involves discount receipt, which will be recorded in JP. Transaction on 9th involves discount receipt, which will go in journal proper. Okay. Next one. Paid commission to salesman. What is the entry for paying commission to salesman? Commission to salesman आएगा कि commission to cash आएगा कि salesman to cash? What will be the entry for that? Commission to cash. So how do you post it? Commission to cash. Commission में to cash, cash में buy commission, cash में buy commission. In the cash column, that will be 3250. Cash column, that will be 3250. Being commission paid. Being commission paid. Okay. That is on 11th. Then received a bearer check of 1,000 rupees from Pradeep and deposited the same into bank. जैसे चेक आया वैसे ही तुमने बैंक में डिपॉजिट कर लिया सेम डे पे. So what will be the journal entry? Bank to Pradeep. Bank to Pradeep. Absolutely right. Bank to Pradeep because same day deposit. So bank to Pradeep. So to Pradeep in bank column. Directly in bank column. अगर खाली ऐसा दिया होता कि bearer check received है तो it would have been cash. You getting it? Only bearer check received would have been cash, but bearer check received and deposited on the same day. So bank is the receiver on the same day itself. That will be bank to Pradeep. Is that clear? So bank to Pradeep being bearer check received and deposited. Being bearer check received and deposited. Being bearer check received and deposited. This is on 12. Then give charity to old age home 1500. Now this charity thing you can put it under sundry expense also. Okay. Otherwise there is a separate account you can use for charity. Charity account भी use कर सकते हो या donation account भी use कर सकते हो. Okay. This type of expense you can put it under sundry, but not printing stationery, not your traveling, not your transportation. Okay. वो सब के लिए अलग heads use करना है आपको. Keep that in mind. Tell me. एंट्री कैसे करना है यहाँ पे? विल बी यूजिंग डोनेशन अकाउंट. तो डोनेशन टू कैश, चैरिटी टू कैश भी कर सकते हो इसका. तो हाउ विल यू पोस्ट इन योर कैश अकाउंट? इट विल बी बाय चैरिटी या डोनेशन अकाउंट. चैरिटी या डोनेशन दोनों में से एक लिखना. गिविंग यू बोथ द चॉइसेस ओवर हियर. यू कैन आल्सो यूज सन्ड्री एक्सपेंस फॉर दिस. तो बाय चैरिटी या डोनेशन अकाउंट या फिर बाय सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट. Being charity paid. Being charity paid. Charity given, yeah. Charity paid. Okay. Comfortable? Next one. Give charity to purchase goods of 15,000 at 2% cash discount. 15,000 का goods खरीदा है 2% cash discount. So what will be the journal entry for this? Purchase to cash. That's it कि discount आएगा. Discount भी आएगा. Purchase to cash to discount. So if you split up, you get purchase to cash, purchase to discount.
Where will you record purchase to cash in which book? Cash. Cash book. So cash book में buy purchase. How much? Would it be 15,000? Purchase to cash should be how much? 14,700. 14,700. Out of 15,000, you subtract 2% CD. That gives you 14,700 in the cash column. So buy purchase cash column being goods purchased for cash. Being goods purchased for cash. That is on 18. What about purchase to discount received? Where do you put purchase to discount received? I think that will go in journal proper transaction on 18th. Involves discount received, which will be recorded in journal proper. Which will be recorded in journal proper. Next one, sold goods for cash 10,000 at 2.5%. Trade discount. अभी trade discount आ गया. So what are you supposed to do? Trade discount है तो क्या करना है आपको? Trade discount है तो would it be recorded in the books TD? No. Entry क्या बनेगा इसका? What will be the journal entry? 9750. 9750 पे record होगा and what will be the entry? It will be simply cash to. Cash to sales. So to sales account in the cash column 9750. इधर भी discount है but trade discount है तो obviously trade discount is never recorded in the books. Being cash sales made. Being cash sales made. Being cash sales made. Got it? Next one. Issued a check of 2230 to Anand Enterprise for advertisement. So what should be the entry? Should it be Anand to bank? Yeah, advertisement to bank. What do you think? Advertisement to bank, because it's an expense, obviously. So you don't write party's name over there. So it is for advertisement. Advertisement to bank. Advertisement, by advertisement in the bank column, it will be 2230 because it is check issued. Being advertisement paid. Yeah, being advertisement expense paid. This is 23rd. And we have received a bearer check from Bina, rupees 3450 and discount allowed 50 rupees. देखो ध्यान से पढ़ो वापस. Received a bearer check of 3450 and discount allowed is 50 rupees. So is that 3450 after discount or before discount? After. After discount. That's your after discount amount. बराबर है? तो entry क्या बनेगा आपका? What will be the journal entry? You are receiving a bearer check. What will be the entry? Bina to cash to Bank to Bina. Cash to cash discount allowed to Bina. So simple. Cash discount allowed to Bina. Cash discount allowed to Bina. Okay. Cash आ रहा है ना यार bearer check. You are receiving. So cash to Bina and discount allowed to Bina. Okay. So cash to Bina. So cash to Bina will go in cash book to Bina. Cash column 3450 as it is after discount. Check received paid is always after discount. So to Bina account cash column 3450 being bearer check received. Being bearer check received. And what about discount allowed to Bina? Journal. Discount allowed to Bina will go in journal prop. Discount allowed to Bina will go in journal prop. So go to journal proper and mention the note transaction on 24th involves discount allowed, which will be recorded in JP, which will be recorded in journal proper. Is it clear? Got it? Next one.
Carriage paid. What is the entry for carriage paid? I think it is simple. Carriage to cash. So by carriage account, cash column 150 being carriage paid. Being carriage paid. Okay. Then deposited into the bank, the check received from Bina. Deposited into bank, the check received from Bina. Bina से कितने का check आया था आपको? 3450. 3450 की 3500. 3450. It's over here. Okay. So 3450 का check, you are now depositing it into bank. So what entry will you pass for depositing the check in the bank? Bank to cash. Bank to cash. Very good. It's a contra entry. Bank to cash. Again, bank to cash करना है यहाँ पे contra. So how will you write? Bank to cash. So to cash in the bank column. Bank में पैसा आ गया. To cash in the bank column. And to cash का corresponding part by bank account in the cash column. By bank account in the cash column, amount will be 3450. Narration कोई भी एक जगह पे लिख दो. Being check deposited. Being check deposited. This is on 28 July. Is this clear? Bank to cash. It's a contra entry for depositing the check into the bank. तो पहले कभी तो चेक आया था बीना का 3450 और वही सेम चेक हमने अभी बैंक में डिपॉजिट कर दिया. तो बैंक टू कैश 3450. Then it is given paid salary 6600 and rent 3200. So what entries we pass for these expenses? What entry you pass? It will be salary account debit, rent account debit to cash account, right? Nothing is given, so cash. The salary to cash and rent to cash. तो यहाँ पे आ जाएगा by salary account cash column 6600. Since there are two separate transactions over here in the cash book, two separate narration being salary paid and separate entry for rent by rent account 3200 cash column and being rent paid. Separate entry, separate narration. Cash book के लिए हमेशा याद रखें. No common narration. इधर कोई combined entry नहीं हो रहा है क्योंकि ये ledger है. Ledger में हमेशा split entries होता है. Separate entries होता है. Is that clear? The last one, 30th one, check received from Bina is dishonored. Check received from Bina is dishonored. Now I want you all to write. Bina to bank. Sorry. Bina to bank. Bina to bank. बराबर है. Entry तो right है. और what about discount? Discount allowed will go in the debit side. अरे Credit side. Credit side. credit side. Credit side. Okay. देखो ध्यान से देखो बीना का क्या सिचुएशन था. This is the most important entry of the entire problem and this is what you are going to get in every exam, every test. ये dishonor आएगा ही आएगा कैश बुक के प्रॉब्लम. देखो आपका स्टार्टिंग में एंट्री क्या था. जब आपको चेक मिला बीना से तो आपने ये एंट्री किया. कैश अकाउंट डेबिट 3450. Discount allowed account debit 50 rupees to Bina account 3500. This is what you did, right? क्योंकि वो bearer check था. फिर हमने वो चेक को बैंक में डिपॉजिट किया. तो we wrote this entry. Bank to cash 3450. Bank to cash 3450 for depositing the check into the bank. Correct? अब जब आपने ये चेक डिपॉजिट किया ना बैंक में, एट द सेम वेरी मोमेंट क्या हुआ, ये कैश नलिफाई हो गया. ये क्रेडिट और ये डेबिट ये कैंसिल हो चुका है. अब बचा क्या है, ये मसाला बचा है. बैंक डेबिट में है, डिस्काउंट अलाउड डेबिट में और बिना क्रेडिट में. दिस इज व्हाट इज लेफ्ट आउट ऑफ द टू एंट्रीज. नाउ दिस चेक गॉट बाउंस्ड. बाउंस का मतलब याद है, डिसऑनर, नॉन पेमेंट, स्टॉप पेमेंट. ओके. So what do we do in case of dishonor? What we do in case of dishonor? We reverse the original entry. Original transaction cancel हो चुका है आपका, तो we need to reverse the original entry. Reverse कैसे करने का, बहुत ही simple है.
डेबिट को क्रेडिट दो, क्रेडिट को डेबिट दो. इज दिस क्लियर? So reverse the original transaction, cancel the original transaction. So what will be the cancellation entry of this? इसको reverse करना है. तो बहुत ही सिंपल है. बैंक जो डेबिट है उसको क्रेडिट कर दो, तो टू बैंक. बीना को क्रेडिट दिया था तो बीना को डेबिट दे दो. और डिस्काउंट अलाउड का क्या होगा? What will happen to discount? Discount allowed ही टू रहेगा. डिस्काउंट रिसीव्ड करूं कि टू डिस्काउंट अलाउड ही रखूं? Allowed ही रहेगा. अलाउड ही रखने का. याद है, रिवर्सल हो जाता है डिस्काउंट का. इसका लॉजिक क्या हुआ? लॉजिक भी बहुत ही सिंपल है. जब बीना से चेक मिला था मेरे को, तब मैंने डिस्काउंट अलाउ किया था ना. अब चेक ही बाउंस हो गया तो काय का डिस्काउंट? पेमेंट ही उल्टा हो गया. जो आया हुआ चेक है वही रिवर्स हो गया. तो व्हाई डिस्काउंट? व्हाट इज द नीड ऑफ डिस्काउंट? Okay, will I allow discount? Am I fool to allow any discount again? No. तो मैं तो अभी बीना को क्या करेगा? बीना को 3500 से ही डेबिट करेगा. पूरा जितना क्रेडिट दिया था पूरा कैंसिल, डेबिट. अब बीना को मुझे वापस कितना पैसा देना पड़ेगा अगर देना है तो? 3500. क्योंकि बिफोर शी पेड मी ना, दैट्स व्हाई आई अलाउड हर अ डिस्काउंट. नाउ तो दैट चेक गॉट बाउंड, तो व्हाई डिस्काउंट? डिस्काउंट आल्सो गॉट नलिफाइड, रिवर्स्ड. ओके. And how much will Beena pay me after this dishonor? तो full 3500. I will expect full 3500. इसके बाद we will check, अगर बहुत टाइम से जल्दी है या क्वेश्चन में दिया है तो ही डिस्काउंट अलाउ करने का, अदरवाइज नो डिस्काउंट. फिलहाल तो हमें 3500 ही लेना बाकी है फ्रॉम Beena. Getting it? So dishonor entry, 1 second. Dishonor entry में क्या ध्यान रखना है? If the check has been deposited, यहाँ पे कैसा चेक डिपॉजिट हो गया था ना बैंक में, तो मेरा डिसऑनर एंट्री क्या लिखा मैंने? व्हाट डिसऑनर एंट्री डिड आई पास? डिड आई पास बीना टू कैश टू डिस्काउंट या बीना टू बैंक टू डिस्काउंट? व्हाट इज अ डिसऑनर एंट्री? बीना टू कैश टू डिस्काउंट कि बीना टू बैंक टू डिस्काउंट? बीना टू बैंक टू डिस्काउंट. व्हाई नॉट बीना टू कैश टू डिस्काउंट? डिड यू गेट इट? Cash is already cancelled. Cash is not there in the picture. इसीलिए बैंक में ही पड़ा हुआ है चेक, तो बैंक को नलिफाई करो. But dishonor entry does not have cash, right? It can have. That's what I was coming to. Now, suppose ये हुआ होता बीना के केस में, ये डिपॉजिट किया ही नहीं था चेक, मेरे को बीना से बेरर चेक आया, मैंने क्या एंट्री मारा है? कैश डिस्काउंट टू बीना. अब बीना ने बोला रुको रुको रुको, बैंक में मत डालना, अकाउंट में पैसा नहीं है, डिसऑनर है, मैं आपको 1 महीने के बाद पैसा देती हूँ, कुछ अरेंज करें. ऐसा कुछ तो सेटलमेंट हुआ. तो फिर क्या करना पड़ेगा? ये चेक तो बाउंस हो गया, तो मुझे रिवर्स करना पड़ेगा. नाउ व्हाट विल बी द रिवर्सल एंट्री? अभी तक चेक डिपॉजिट किया ही नहीं है बैंक में मैंने. अब व्हाट रिवर्सल एंट्री विल आई पास? व्हाट विल बी द रिवर्सल एंट्री फॉर दिस? Beena to to cash to discount allowed. Are you getting that? क्यों? Why I don't write bank and why I write cash now? Because she had paid us cash, right? Bearer check. She has given us a bearer check which is not yet deposited in the bank. तो in short आपको डिसऑनर एंट्री में बैंक कब लिखना है और कैश कब लिखना है? बड़ा ही सिंपल है. अगर आपका चेक बैंक में डिपॉजिट हो चुका है, इफ यू हैव डिपॉजिटेड द चेक इन द बैंक, देन इन द डिसऑनर एंट्री यू विल राइट बैंक अकाउंट. बट इफ यू हैव नॉट डिपॉजिटेड द चेक येट and before that only information of dishonor is known, then in the dishonor entry which account will you use? Cash or bank? Cash account. Okay, so याद क्या रखना है? जब भी चेक बैंक में डिपॉजिट हो गया है, जैसे इन अवर एग्जाम्पल बीना वाले अपने सम में ये एंट्री हो चुका है, बैंक टू कैश, वी हैव डिपॉजिटेड द चेक इनटू द बैंक. सो व्हेनेवर यू डिपॉजिट द चेक इनटू बैंक, कैश इज ऑलरेडी नलिफाइड. तो अब डिसऑनर एंट्री में विच अकाउंट विल आई यूज? कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट? बीना टू बैंक टू बैंक अकाउंट. ओके, बट अगर चेक डिपॉजिट ही नहीं किया होता तो कौन सा अकाउंट यूज करने का डिसऑनर एंट्री में? बोलो.
अगर चेक डिपॉजिट ही नहीं किया होता तो कौन सा अकाउंट यूज करते हैं? कैश अकाउंट कैश अकाउंट। ओके, डिपॉजिट कर लिया है तो बैंक, डिपॉजिट नहीं किया है तो कैश। इज दैट क्लियर? अनदर साइड वुड बी पार्टीज नेम, पार्टीज नेम तो रहेगा ही हमेशा। यस, व्हाट वाज द डाउट? सर ये टू डिस्काउंट अकाउंट वो बस फॉर्मेलिटी के लिए लिखना है ना आफ्टर दैट, बिकॉज बीना को तो फुल 3.5 ही पे करना पड़ेगा अभी। हाँ, बीना को फुल 3.5 देना पड़ेगा, इसीलिए ये डिस्काउंट लिखा है। ये डिस्काउंट हम लोग नया नहीं लिख रहे हैं, ये इसको कैंसिल आउट कर रहे हैं, ओरिजिनल डिस्काउंट को नलिफाई कर रहे हैं। अगर मैं ये डिस्काउंट ना लिखता समझो तो एंट्री क्या होती? ये होती बीना टू बैंक 3450। इसका मतलब क्या है कि बीना हैज टू पे मी 3450, which is not the situation. बीना हैज टू पे मी हाउ मच? 3500। वो कब होगा? जब मैं उसको पूरा 3500 का डेबिट दूंगा। डेबिट द रिसीवर, I am creating a debtor of 3500. She has to pay me 3500. Okay. So always in the dishonor entry, if there is any discount, it will be reversed. So for that, we have a shortcut in the cash book. Okay, I want you all to write that shortcut anywhere, either in the textbook or in the notebook or in the last page, wherever you can refer to that note. आप ये points लिख के रखो, उधर लिखो steps of dishonor. Steps of dishonor. 4 steps are there. Opposite side, party's name, reverse the discount, same column. Whenever you are doing dishonor entry in cash book, जर्नल एंट्री के थ्रू भी कर सकते हो। अभी अभी जो मैंने बताया आपको उल्टा ही करना है आपको। डिसऑनर मतलब क्या है? ओरिजिनल एंट्री का उल्टा। खाली ध्यान क्या रखना है? डिपॉजिट कर लिया है तो बैंक, नहीं किया है तो कैश अकाउंट, और डिस्काउंट तो रिवर्स करना ही है। अलाउड है तो अलाउड क्रेडिट हो जाएगा, रिसीव्ड है तो रिसीव्ड डेबिट हो जाएगा। एंट्री के थ्रू भी कर सकते हो आप। अगर आपको एंट्री के थ्रू अगर सपोज कुछ याद नहीं आ रहा है तो ये शॉर्टकट्स यू कैन रिमेंबर in cash book. Opposite side, party's name, reverse the discount and same column. Let's apply that shortcut to बीना वाला एंट्री। देखो कौन सा चेक डिसऑनर हुआ है? आया हुआ चेक कि दिया हुआ चेक? आया हुआ चेक। ओके, सो ऑपोजिट साइड, फर्स्ट स्टेप इज ऑपोजिट साइड। ऑपोजिट साइड मतलब क्या? रिसीट का चेक है तो पेमेंट में, पेमेंट का चेक है तो रिसीट में, ऑपोजिट साइड। तो बीना वाला चेक कौन से साइड पे लिखूं अभी? डिसऑनर एंट्री ऑपोजिट साइड मतलब विच साइड? पेमेंट। रिसीट वाला चेक डिसऑनर हो रहा है ना तो पेमेंट में जाएगा। पेमेंट इशूड चेक डिसऑनर आ रहा है तो रिसीट में जाएगा। तो ऑपोजिट साइड मतलब ये साइड। सेकेंड पॉइंट क्या दिया हुआ है वहां पे? पढ़ो, व्हाट इज द सेकेंड पॉइंट? पार्टीज नेम। व्हाट इज द पार्टीज नेम? बीना। So buy Bina account. Buy Bina account. Step number 2 done. What was step number 1? Opposite side. Receipt का payment, payment का receipt. Step number 2, party's name. To Bina का buy Bina, buy Ashok का to Ashok. Is that clear? Third step, reverse the discount. Was there any discount in the original transaction? Yes. What was the discount? 50 rupees. 50 rupees. और वो discount का reversal entry क्या होगा? यहाँ पे देखो. What will be the reversal entry of discount? Bina to discount allowed. Can you see that? And it will go in which book? Bina to discount allowed? Journal proper. Journal proper. Note में जरा ध्यान से देखना, note थोड़ा अलग है यहाँ पे। Transaction on 30th involves reversal of discount allowed. Reversal of discount allowed, which will be recorded in journal proper. जो हमने एंट्री में लिखा है ना, बीना टू डिस्काउंट अलाउड, उसी का नोट लिख रहा हूं मैं। अगर जेपी में एंट्री होती तो बीना टू डिस्काउंट अलाउड ही लिखते। ओके, जर्नल प्रॉपर नहीं बना रहे तो नोट में लिखने का क्या लिखोगे? रिवर्सल ऑफ डिस्काउंट अलाउड। डिड यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ रिवर्सल ऑफ डिस्काउंट अलाउड?
रिवर्सल मतलब उल्टा किया, रिवर्सल ऑफ डिस्काउंट अलाउड विच विल बी रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर. ओके, एंड लास्ट स्टेप क्या है, पढ़ो वहां पे. फर्स्ट स्टेप इज ऑपोजिट साइड, देन पार्टीज नेम, रिवर्स द डिस्काउंट, एंड व्हाट इज द फोर्थ स्टेप? Same column. सेम column. कॉलम. तो अभी कौन सा कॉलम में डालू, बोलो. 3450 दोनों जगह पे, कैश भी है बैंक भी है. यहाँ पे कौन सा कॉलम में लिखो? बैंक. बैंक कॉलम. क्यों बैंक कॉलम? रीसेंट. हाँ, बैंक. रीसेंट देखने का. रीसेंट कहाँ पे? वो चेक बैंक में जा चुका है, डिपॉजिट हो चुका है, तो बैंक कॉलम 3450. अगर ये चेक डिपॉजिट नहीं हुआ होता तो In cash column. then it Cash would have been column. cash call. Did you get it? चेक डिपॉजिट कर लिया है, इसके लिए बैंक कॉलम. चेक डिपॉजिट नहीं किया होता तो कैश कॉलम. Understood? All of you got that? So 4 steps to remember. चेक डिपॉजिट कर लिया है तो बैंक, नहीं किया है तो कैश. And rest of the part is normal. Opposite side, parties name, reverse the discount. Okay, and same call. तो ये हुआ चेक डिसऑनर्ड बीइंग बीनाज चेक डिसऑनर्ड. बीनाज चेक डिसऑनर्ड. डिसऑनर का 4 स्टेप्स. बोलो मेरे को, व्हाट आर द 4 स्टेप्स ऑफ डिसऑनर? कम ऑन ऑल ऑफ यू, व्हाट आर द 4 स्टेप्स ऑफ डिसऑनर? टेल. स्टेप नंबर 1, ऑपोजिट साइड. ऑपोजिट साइड. स्टेप नंबर 2, party's name. Party's name is a must. Dishonor entry should always have party's name. Okay, if the original entry is furniture to bank, dishonor entry will be not bank to furniture, it will be bank to creditor. Okay, तो याद रखना party's name. Okay, opposite side party. party से लेना देना बाकी है. dishonor entry में हमेशा party का नाम रहेगा. Then third step, reverse the discount. If there is any discount in the original transaction, then reverse it. Allowed है तो credit करो, received है तो debit करो. And fourth step is Same column. same column. कैश है तो कैश कॉलम, बैंक है तो बैंक कॉलम. मेरे को बोलो कैश कॉलम में कब आएगा डिसऑनर पार्ट? When will you have dishonor entry in cash column? Second, When the check is not yet deposited. एक बार चेक डिपॉजिट हो गया बैंक में तो फिर डिसऑनर एंट्री में क्या आएगा? बैंक कॉल. अगर आपको वेरीफाई करना है आपने डिसऑनर एंट्री करेक्ट पास किया है कि नहीं, देखो यहाँ पे वेरीफाई भी कर सकते हो. कैसे करोगे? ये दिख रहा है यहाँ पे, कैश 3450, कैश 3450 कट, बैंक 3450, बैंक 3450 कट. दोनों डेबिट क्रेडिट में आपको नलिफाइड अमाउंट मिलेगा, सेट ऑफ हो जाएगा. Sir, can you repeat the fourth step? सेम कॉलम. Okay, thank you. कैश है तो कैश कॉलम, बैंक है तो बैंक कॉलम. ओके, सो आफ्टर दैट योर अमाउंट्स वुड गेट नलिफाइड. इधर दिख रहा है डेबिट क्रेडिट नलिफाइड, डेबिट क्रेडिट नलिफाइड. वो जीरो हो जाएगा ऑटोमेटिकली आफ्टर डिसऑनर. ओके, अब आफ्टर डिसऑनर मुझे बीना से कितना पैसा लेना बाकी है बताओ. हाउ मच मनी एम आई सपोज टू रिसीव फ्रॉम बीना? 3500. ओके, जब देगी तब देगी पैसे, तब रिकॉर्ड करेंगे. अभी बंद करो इसको, शट डाउन द कैश बुक. Sir, Side, typically we come to know that check is dishonored after depositing in the bank. So how can we know that it is dishonored by without depositing? I told you na just now. Mainly 99% majority of the cases after depositing only you will come to know. But sometimes you have given me a bearer check, let us say of 10,000 rupees. I have not yet deposited that check in the bank. Not yet deposited that check in the bank. You gave me that check. Okay, I have written an entry cash to Isha in my books. Then you told me that please don't deposit. There is a mistake in the amount. Please don't deposit. There is mistake in the signature. So I did not deposit that check. मैंने deposit का entry नहीं किया है. तो तुमने अभी बोल दिया बाउंस हुआ है. मैं तुमको 1 महीने बाद दूंगी पैसा या 1 वीक बाद दूंगी या कोई और मोड से ट्रांसफर कर रही हूँ पैसा, आरटीजीएस एनईएफटी के थ्रू कर रही हूँ. वो चेक बैंक में मत डालना. तो मुझे फिलहाल ये एंट्री तो रिवर्स करना पड़ेगा ना जो मैंने पास किया है, कैश टू ईशा. तो कैश टू ईशा का क्या हो जाएगा? ईशा टू कैश. द चेक हैज नॉट रीच्ड ओनली द बैंक पार्ट येट, एंड बिफोर दैट ओनली आई गेट एन इन्फो दैट इट इज, सर देयर इज सम मिस्टेक और एरर एंड इट इज बाउंड. It will get bound.
So I'll have to reverse that. Got it? So ऐसा भी हो सकता है, very rarely, but 99% absolutely right. ईशा said कि आपका चेक बैंक में डिपॉजिट होने के बाद ही डिसऑनर होगा. Okay, 99% of the case. Okay, तो बैंक अकाउंट ही आता है मेजॉरिटी केस डिसऑनर एंड. कैश बहुत ही रेयर आएगा. चलो बताओ मुझे डेबिट साइड टोटल ऑफ कैश. 42,200. 42,200. Yes. ओके, बैलेंस किया है कैलकुलेट बाय बैलेंस 5030. 50 Sorry, 3350. 3350. Please check, is she right? 31st July 11. What is the total of bank? Which side is greater in bank? Credit side is greater. 30480. 30480. बैंक का कोई भी बड़ा हो सकता है साइड, डेबिट या क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है. सो बी अलर्ट. Hello, mic testing. All of you are listening. Cash, always your debit side will be greater, but bank, it can be either of the two. Okay, debit or Balance credit. is 5030. Balance is 5030 on this side. So what will you write to balance CD? Bank column 5030. तो यहाँ पर गम्मत हो रहा है. क्या गम्मत हो रहा है दिख रहा है आपको? Cash is having a debit balance. Debit side is greater in cash, but bank is having a which balance? Credit. It's balance. What? क्वेश्चन के स्टार्ट में दिया है ना, बैंक ओवरड्राफ्ट है. वो तो स्टार्टिंग का है बेटा, ओपनिंग बैलेंस है वो. यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा 5000. तो सर क्रेडिट बैलेंस ज्यादा ही होगा ना बैंक साइड में. तो नहीं, जरूरी नहीं है. ओपनिंग में ओवरड्राफ्ट है तो जरूरी नहीं है कि क्लोजिंग में भी ओवरड्राफ्ट हो. बीच में ज्यादा पैसा आ गया तो हो सकता है ना. ओपनिंग में ओवरड्राफ्ट था 5000 का और बाद में 15000 मिल गया तुमको, तो नॉर्मल बैलेंस हो जाएगा क्लोजिंग में. गॉट इट? तो ऊपर का बैलेंस का नीचे के बैलेंस के साथ कोई लेना देना नहीं है. ऊपर का बैलेंस ओपनिंग है, फिर महीने के बीच में कितना पैसा आया कितना पैसा गया उसके हिसाब से क्लोजिंग बैलेंस वुड बी डिसाइडेड. ओके, तो क्लोजिंग बैलेंस में ओनली वन थिंग इज गारंटीड, दैट कैश विल हैव डेबिट बैलेंस. कैश विल ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस. कैश कैन नेवर हैव क्रेडिट बैलेंस. इम्पॉसिबल. ओके, cash is always debit balance. Debit side will be greater in cash. But what about bank? What about bank? Is it a guarantee that your debits will be greater in bank, or is it a guarantee that your credits will be greater in bank? No, either of the two it may have. Okay, so यहाँ पर it is buy balance carried down in cash column 3350 and to balance carried down in bank 5030. All of you got that? अभी इसको रिवर्स साइड पे लेके जाओ, नीचे की साइड पे लेके जाओ. ओके, एंड राइट डाउन द ओपनिंग बैलेंसेस एज वेल. ओपनिंग बैलेंसेस भी लिख दो. ओपनिंग बैलेंस भी ऑपोजिट साइड पे जाएंगे. देखो ध्यान से मैं कैसे लिख रहा हूं. ये जो बाय बैलेंस सीडी है ये क्या बनेगा? टू बैलेंस बीडी. So to balance BD in the cash column will be 3350 on 1811. ये दिख रहा है, ये buy balance CD का हो जाएगा to balance BD. And what about this to balance CD? To balance CD का क्या हो जाएगा next month में? Buy balance BD. Buy balance BD. Buy balance BD. Which column? Buy balance BD. In which column? Bank column. Did you get it? To balance CD will become buy balance brought down. Buy balance CD will become to balance brought down. Is that clear? Comfortable, all of you? So what was the new part in this problem? There were two new things. Number one, dishonor entry. Dishonor entry कैसे करना है याद है? Opposite side, receipt का payment, payment का receipt. Dishonor means reversal. Original entry का cancellation. Zero कर रहे हो position. Okay, that is dishonor.
So opposite side receipt का payment का receipt, party's name होना चाहिए dishonor में. Third step is what? Reverse the discount. If there is any discount allowed, you credit it. If there is any discount received, you debit it. And same column. अगर चेक डिपॉजिट नहीं किया, कैश में है तो कैश कॉलम, चेक डिपॉजिट कर लिया है तो बैंक कॉलम. Comfortable? And next step, next second important thing different in the problem was overdraft. Overdraft और normal balance का logic समझा? हेलो, ओवरड्राफ्ट मतलब क्या है यहाँ पे? नहीं समझा. क्या नहीं समझा? का जो बैलेंस का पार्ट था ना वो. बैलेंस का पार्ट देखो, बैलेंस के पार्ट में कैश का कौन सा बैलेंस होगा ऑलवेज एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द मंथ? कैश विल ऑलवेज हैव व्हिच बैलेंस? Will always have debit. Cash will Debit. always have debit balance. Okay, so debit side is greater than credit side. So can you see that 42,200 debit is greater and ये छोटू है credit side पे, the difference is 3,350. So cash is always debit balance. Buy balance CD will become to balance BD. बैंक में you have to check, total करके check करने का कौन सा side बड़ा है. So in this sum, which side of bank is greater, debit or credit? You have to check. सब ले लेने का पूरा बैलेंस के साथ, ओपनिंग बैलेंस के साथ. क्रेडिट साइड इज ग्रेटर ना, तो 3030480 इज द टोटल ऑफ क्रेडिट, वो दोनों बाजू लिखो. एंड ये छोटा है ना डेबिट में, तो व्हाट विल यू राइट हियर? बाय बैलेंस सीडी और टू बैलेंस सीडी? टू बैलेंस सीडी. जैसे लेजर में करते थे ना, मैंने वही किया है. Same thing which we used to do in ledger. Okay, okay, got it. Got it? So to balance CD will become what? Buy balance BD only na, in the bank column. Are you getting it? To balance carried down will become what? Buy balance brought down in the bank column. Okay? To balance carried down will become buy balance brought down. And buy balance carried down will become to balance brought down. Opposite side पे जाता है. Is it clear? So cash column will have to balance brought down 3350 and bank column will have buy balance brought down 5030. Got it all of you? Normal balance ledger का ही balance है, खाली column का याद रखना है. Cash का हमेशा to balance BD, बैंक का दोनों हो सकता है. यहाँ पे buy balance CD है तो it will become to balance BD, या to balance CD है तो it will become buy balance BD. Okay? Comfortable? चलो next sum. Draw for the next sum number. Sum number it is 11. 11th sum draw करो सब लोग फटाफट. 11th sum. Video should be on. Off videos I am kicking out. It won't be taken now again. Sir, I'm sitting on my phone. Whenever I'm opening my video, turning on my video, I'm getting disconnected. You keep it on. When the net will come, it will be on I automatically. tried twice in the chat. You keep it on only. The net is on only, but it is getting disconnected, then I'm missing a lot. Okay, ठीक. Sir, I'm sitting on the phone, so I have to see now. That's why I'm keeping it off. Video should be on. Draw for the next sum number 11. 11 sum का draw करो सब लोग. In the cash book of on ये नाम ही नहीं दिया. In the cash book of ...
Can I start? 11th one. Do you have any opening balance in the 11th sum? Tell me the first line. No opening. It's a new business. No opening balance. It's a new business. Started business with cash. So what is the entry for that? Started business with cash. Cash to capital. Cash to capital. To capital account. Cash column. 30,000. No opening balance. See the transaction hai. Being capital introduced. Being capital introduced. Cash to capital. The to capital cash column. 30,000. Opened a current account with bank and deposited 9,000. Follow. What is the entry? Fatafat. Bank to cash. Bank to cash. What type of entry? Contra. You know how to pass contra now, all of you? How will you do that? To cash. Which column? Bank. Bank column. Bank column. And by bank, Cash column. cash column. Narration. One of the two places being cash deposited. Current account open matlab cash deposited. See in the LF column for contra and dates on both the sides. 2411. 2411. Okay, to cash bank column by bank cash column. Fine. Next one. Received 4850 for cash sales and discount allowed 50. Received 4850 for cash sales and discount allowed. So is it 3850 is 4850 is after discount or before discount? Think. After discount. After discount. We have Received दे दिया. Received के बाद थोड़ी काटोगे discount. हाथ में आया है 4850. तो actually would have sold goods of 4,900. उसके जगह पे आपको 4,850 मिला है. Got it? Entry क्या बनेगा? What will be the journal entry for this? Cash, discount allowed to sales. So split up cash to sales, discount to sales. So cash to sales. So cash में आएगा to sales, cash column how much? To sales, cash column how much? 4,000. To sales, cash column how much it will be? 4850. 4850. To sales, cash column will be 4850. Is that clear? To sales, cash column will be 4850. And what about discount allowed to sales? JP. Discount allowed to sales. Note, journal proper. So go to journal proper, note transaction on if involves discount allowed, which will be recorded in JP. It will be recorded in journal proper. इसका narration लिख लो. Being cash sales made. Being cash sales made. Cash discount to sales. Cash discount to sales. Next one. Purchase goods of 3,000 at 10% cash discount. Half amount was paid by cash and remaining by check. Half amount was paid by check and remaining by cash. Is it on cash credit or partly cash, partly credit? Bolo. Purchase to cash to bank to discount. Very good. It is partly cash, partly credit. All of you solve that. 1350. 3,000 पे पहले तो CD पहले ही ले लो, अच्छा रहेगा. 300 rupees is CD. You get 2,700. उसका half is cash and half is check. So 1350, 1350. Perfect. So your entry is what? Purchase to cash to bank to discount receive. Okay, this is 3,000. This is 1350, 1350 and 300. So purchase to cash or purchase to bank. ये कहाँ जाएगा? Purchase to cash and purchase to bank. Purchase to cash and purchase to bank will go in your cash book.
So cash book में what will you write? So we get buy purchase account, Cash buy column. purchase account and 1350 on the both columns. Exactly. Buy purchase 1350 in each of the two columns. Half cash, half credit. Being cash purchase made. Being cash purchase made. What about purchase to discount received? I think purchase to discount received should go in journal proper. So transaction on 4th involves transaction on 6th, sorry. Transaction on 6th involves discount received, which will be recorded in JP. So discount received will go in your journal proper and your purchase to cash, purchase to bank in cash. Next one. Received a crossed check of 7775 from Megha Associates and discount allowed is 25 rupees. उसके बाद जो 12th वाला है ना वो नेक्स्ट डेट का है 12th वाला वो ऊपर प्रिंट हो गया तो 9th वाला सिर्फ इतना सा है received a cross check of 7775 from Mega Associates and discount allowed 25. Is that 7775 before discount or after discount? After discount. Okay. So entry क्या बनेगा आपका पहले यहाँ पे? What will be the journal entry? Check receive, cross check receive किया. Cross check के लिए which account you use? Bank. So what entry will pass? Bank. To Mega Associates. Bank discount to Mega To Associates. Mega Associates. So to Mega Associates in the bank column. To Mega Associates in the bank column. 7775 being crossed check received. And what about discount allowed to Mega? Where you will write discount allowed to Mega? Where will you put discount allowed to Mega? Journal proper. Journal proper. So transaction on 9th involves discount allowed, which will be recorded in JP, which will be recorded in journal proper, which will be recorded in journal proper. In the next entry, it is for machinery purchase and installation charges made. So can we write the installation charges and machinery? We'll have to show two different entries. Wait, I'm coming to that. Next one, 12th one, purchased machinery of 13,300 and paid installation 700. पहले तो journal entry बोलो इसका क्या होगा? Machinery to cash. Machinery to cash. Cost Okay? concept. Cost concept. Installation will be added. So machinery to cash. How will you post it? Machinery to cash. So cash में buy machinery account. Buy machinery account cash column 14,000. Buy machinery account cash column 14,000 being machinery purchased. Being machinery purchased. Being machinery purchased. Next one, received a bearer check of 737 from Rahul in settlement of his account of 800. Received a bearer check in settlement of his account of 800. Entry क्या बनेगा? Bearer check मिला दो. Cash discount allowed to Rahul. Cash discount allowed to Rahul. So cash to Rahul and discount to Rahul. Cash to Rahul will come here. So to Rahul, cash column 737 being bearer check received. Being bearer check received. And where you will write discount allowed to Rahul? In discount allowed to Rahul should go in journal proper. So transaction on 15th involves discount allowed, which will be recorded in JP. Transaction involves discount allowed, which will be recorded in journal proper. Is that clear? Next one. Cash to Rahul, discount allowed to Rahul. Is that clear? Come to the next one. Deposited into bank. What type of entry is this? Deposited into bank का मतलब क्या हुआ? Contra.
So bank to cash. पैसा deposit किया बैंक में. Okay. So to cash bank column 2000. To cash bank column and buy bank cash column. Buy bank cash column. Being cash deposited. Being cash deposited. See in the LF for contra. Date on both the sides 17. 17. That was simple. Next one. Write down. Next one then. Transferred 8,000 from proprietor's savings to current. What is savings? Personal account. Personal. So So it will be directly capital. bank to capital. Bank to capital is the entry. So how will you post it? To capital account in the bank column. Okay, क्योंकि savings account से आ रहा है. Savings मतलब घर से आ रहा है. घर से मतलब capital. So bank to capital in the bank column, it will be how much? In the bank column, to capital in the bank column 8,000. Okay, being capital introduced. Being capital introduced. Being capital introduced. Then received a bearer check from Vinod. What will be the entry for receiving bearer check? Cash to Vinod, right? Cash to Vinod, cash column 2230, being bearer check received. Being bearer check received, date is 22nd April. To Vinod, cash column 2230. अभी ध्यान से देखो क्या हो रहा है. बेरर चेक तो आ गया विनोद से, ठीक है, तो हमने कैश में लिख दिया. उसके बाद दिया हुआ है कि दिस चेक गॉट डिपॉजिटेड इन द बैंक. दिस चेक गॉट डिपॉजिटेड इन द बैंक. सो व्हाट एंट्री यू पास? बैंक टू कैश. तो कॉन्ट्रा हो गया. टू कैश बैंक कॉलम 2230 एंड करस्पॉन्डिंग एंट्री टू कैश का बाय बैंक कैश कॉलम 2230. बराबर. पहले चेक आया फिर डिपॉजिट कर लिया तो बैंक टू कैश, दैट इज कॉन्ट्रा. बीइंग चेक deposited. Being check deposited. C for contra in LF and date is 24th. Date is 24th. विनोद का स्टोरी समझा अभी तक? चेक आया तो कैश टू विनोद बिकॉज बेरर चेक था, फिर डाल दिया बैंक में तो बैंक टू कैश. अब चेक कहाँ पड़ा हुआ है? वेयर इज द चेक लाइन? विथ बैंक. It's bank. With bank, keep that in mind. Okay, hold that thought. आगे पढ़ो. Bank informed that check received from Vinod is dishonored. Dishonored का rules याद करो. What are the rules for dishonored? Opposite side. So which side I'll write the dishonor entry? Credit side, क्योंकि आया हुआ चेक बाउंस हो रहा है तो रिवर्स कर दो उसको. So buy Vinod. Buy credit side, opposite side. Second step क्या है? Dishonor. What is the second step? Opposite side, then party's name. So what will I write? Buy Vinod, party's name. Third step is reverse the discount. Was there any discount with Vinod? Check. Was there any discount with Vinod? Check and tell me. Hello. Was there any discount at the time of Vinod? No. So no reversal of discount. Okay. And same column. Same column. Matlab which column I'll write the amount in? Cash column or bank column? Think. Cash column because it's bearer check. No. It is bank column. Why bank column?
It was deposited. Already deposited. Because Already we had deposited. already deposited. हाँ, डिपॉजिट कर लिया है तो बैंक, डिपॉजिट नहीं किया है तो कैश. जस्ट नाउ वी डिस्कस द सेम एग्जांपल विद दैट बीना वाला एग्जांपल. रिमेंबर बीना वाला एंट्री. पहले बैरर चेक आया था, डिपॉजिट कर लिया था और फिर डिसऑनर हुआ. तो विच कॉलम विल आई राइट द अमाउंट इन? कैश कॉलम और बैंक कॉलम? बैंक कॉलम. ओके. कैश में कब आता बता सकते हो? वेयर यू वुड हैव, व्हेन यू वुड हैव रिटन इन कैश कॉलम? When it would not have been deposited. Not yet deposited. Not yet deposited, then reversal entry में कैश ही लिखना पड़ेगा. बैंक तक चेक पहुंचा ही नहीं. Okay? So being check dishonored. Being check dishonored. Again देख लो 4 steps हुए हैं कि नहीं. Opposite side yes. Party's name yes. Reverse the discount था ही नहीं. And same call. Same मतलब बैंक call. और आप वेरीफाई भी कर सकते हो आपने राइट किया है कि रॉन्ग. कैसे वेरीफाई करना है याद है? ये देखो 2230 कैश कैश कट, 2230 बैंक बैंक कट, नलिफाई हो जाएगा. दिख रहा है आपको? सो बैक टू 0. अब वापस विनोद से कितना पैसा लेना बाकी है? कैन यू टेल मी हाउ मच आर वी सपोज टू रिसीव फ्रॉम विनोद? 2230. 2230. अगेन वी आर सपोज टू रिसीव 2230. वो देगा तब देगा, अभी तो नहीं दिया, अभी तो भाग गया होगा विजय मल्ल्या के जैसा. नेक्स्ट वन, पेड फॉर प्रिंटिंग बिल बुक. व्हाट इज द एंट्री फॉर पेइंग फॉर प्रिंटिंग बिल बुक? कौन सा एड में जाएगा ये? Printing and stationery. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. ओके. Printing account. तो बाय प्रिंटिंग लिख सकते हो या बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट. बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट, कैश कॉलम 660. कैश कॉलम 660 being printing expense paid. Being printing expense paid. Being printing expense paid. Okay. Withdrew from bank for office use. Withdrew from bank for office use. What is the entry for withdrawal? Cash to bank. Cash to bank. Contra हो गया. So to bank which column? To bank which column? To bank, cash to bank है ना? So to bank which column? Cash. To bank cash account. Cash column. Okay. Cash. And to bank का corresponding entry by cash in the bank column. बैंक से जा रहा है, cash में आ रहा है. That's contra. Narration being cash withdrawn for office. In cash withdrawn for office. C लिख देना for contra. I think that completes the problem. Tell me the total of cash. Cash का debit will be greater. So tell me the total of debit side of cash. Come on. 34, 35, 37, 38 something आएगा. 38 something. Calculate. Jasha, Mr. Hero, please calculate. I think it is 38,817. Yes, sir. 38,817. Please check. 38,817. मिल रहा है? Okay, what about balance of cash? What about balance of cash? Balance will be 29. 11,570. Sorry. I'm getting 11,570. I'm getting 29,005. So that is the 29,005. That is the total of payment, na? Total of bank. yeah. Yeah, The total of bank you are saying. Okay. Total of bank is how much? 29,005. Okay. Tell me the पहले balance बोलो, cash का balance. Cash ka balance is 11,577. 577. I'm getting 57. 9577. 11577. Is that right? 11577. So I'm getting 9577. Even I'm getting 9577. Check, yeah. Come on. Total must be 9,000. And which side of bank is greater? Debit or credit? Bank का? Debit. अच्छा, बैंक का डेबिट ही बढ़ा है इसमें. तो दोनों का बैलेंस इधर ही आएगा, एक ही लाइन पे आएगा. बैलेंस बोलो अभी, कैश का बैलेंस बोलो. 9577 है कि 11577? What is the balance of cash? Bank is 24425. Balance.
Yeah. Check properly. मालूम नहीं पड़ेगा, right? Yeah, yes, sir. Bank is that one. Bank is 24425 balance. Please check. What about cash? Checking cash. What is the balance of cash? दोनों का Cash total is 27240. नहीं, टोटल बैंक का बराबर है 29005. बैलेंस करो कैलकुलेट. Total is correct 29005. You verify some mistake is. Total of cash. Total of cash. Total of cash is also right. Just tell me the balance of cash. Tell me the balance. Debit minus credit karo. Calculate. But I am also getting 9577. 9577. ठीक है चलो. Yes, sir. 9577. So 2 balance BD. What will this buy balance carried down become now? Tell me. Buy balance CD क्या बनेगा? Balance brought down. 2 balance brought down. इधर कोई अलग अलग बैलेंस है? नॉर्मल ओवरड्राफ्ट ऐसा? No. No. Both the balances are buy balance carried down. Okay, debit balance. First one. So दोनों बैलेंस इधर ही साथ में आ जाएंगे. 2 balance brought down करके 9577 cash column and 24425 in the bank column. Is this clear? 24425 in the bank, 9577 in cash. 1511 is the date. 1511 is the date. 1511 is the date. Okay. Now I want you all to solve sum number 14 on your own. 14th problem I want you all to solve on your own. It also has a dishonor entry and it has bank overdraft in the beginning. So remember that. अच्छा. Narrations में किसी को issue है कुछ? Anyone any problem with narration? Just Shah, are you listening? Yes sir, yes sir. इधर है ध्यान तुम्हारा. सर बुक पे सर दिख रहा था. बुक को देख के हंसना नहीं रहता है. मोबाइल में चैट को देख के हंसना रहता है. नहीं सर, कोई चैट नहीं. हाँ. मम्मी बाजू में बैठी है सर. अच्छा. चलो. 2 balance BD 9577 and 24425 मिला सबको यहाँ पे. अभी नरेशन किसी को इश्यू आ रहा है? नरेशन एनी प्रॉब्लम एनीवन? कंफर्टेबल ना? स्किप नरेशंस, विदाउट नरेशंस. ओके. 14th sum. Do it on your own. चलो. Sum number 14 without narrations. Start. Try not to take any help. All the entries we have done. Dishonor भी है उसमें. बैलेंसिंग मत करना. टोटल वोटल हम लोग एंड में करेंगे. पहले सम कंप्लीट करो. पूरा सम करो. खुद से करो. अगर ये प्रॉब्लम खुद से आ गया तो you are through for HR and Somaya and SIS papers. This is the level. HR, Somaya, SIS. Sir, which sir? Sum number 14, 1-4. Sir, मीठी बाई का difficult होगा इससे easy होगा. मीठी बाई अरे difficult. मीठी बाई, पोदार, NM will be difficult than this. वो लेवल आएगा आगे. HR, KC, Jai Hind, Somaya, SIS. In fact, all the other colleges except for Podar and MIT. This is a level you can expect. Yeah, आ गया तो live जिंगाला. सर इससे easy वाले लेवल पे कोई कॉलेज है क्या? तू मीठी बाई में ही रहे और डिफिकल्ट कर थोड़ा. इस महीने थोड़ा पढ़ाई करेगा. तो भाई एनएम में था ना? हाँ सर. तो फिर on start. No narration, skip narrations. Just the entries.
बैलेंसिंग मत करना घाई घाई में, लास्ट का क्लोजिंग बैलेंस रुक जाना, पहले एंट्रीज बराबर होना चाहिए, फिर बैलेंस और टोटल सब साथ में करते हैं हम। पोस्टिंग कर लो सब। And still from yesterday, 6 people haven't submitted the homework yet. The homework, if you are not doing now, you are screwing up your own self. I'm telling you, it's very simple. तो मेरा डर से या मैं बोल रहा है इसके लिए कर रहा है ना, तो it doesn't make sense as it is. Even if you are copying, you are wasting time. If you are doing homework, you will be practicing. पेपर में तुम सॉल्व करके आएगा, 12th स्टैंडर्ड में तुमको काम आएगा. तुमको अगर नहीं करने का है तो प्रैक्टिस ही नहीं हो रहा है, मतलब तुम्हारा जो भी मैं लिख रहा है कॉपी करके जा रहा है. इट्स मंकी बिजनेस. यू आर नॉट गेटिंग द पॉइंट. आगे जाके पेपर वेपर में सब क्लीन बोल्ड ही होने वाला है. अभी तुमको मजा आ रहा है टाइम पास करके, आगे जाके सजा मिलेगा तुमको बराबर. नो वन वुड बी देयर टू हेल्प यू दैट. So homework I give you, that is for a reason. You come to know how much time you take. You come to know what mistakes you do whenever you do it on your own. If you are escaping homework, 6 लोग अभी भी पागल जैसा होमवर्क नहीं दिखाया है, फिर इतना बड़ा इम्पोजिशन आएगा ना साथ में, हालत खराब हो जाएगा तुम लोग. तो बेटर डे टू डे जो भी है होमवर्क करके कंप्लीट करके सबमिट करो. So 9th has a printing error. नहीं नहीं बराबर है. देखो क्या दिया है, परचेज 100 shares of Amar Limited of 100 each at 110 and paid the amount by check immediately. So there are two values given to you, 100 and 110. Which value you have bought it for? 110. 110. So you will record the entry at which amount? 110. 110. So what is that 100 then? Face value. Exactly. That is the face value. That is the face value. Okay, फेस वैल्यू आता था पता है, FV लिख लिख के आता था, बेस प्राइस इश्यूड. फेस वैल्यू दिखता था ट्रांजैक्शन में 10 rupees 100 rupees. तो फेस वैल्यू इज जस्ट अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. Okay, you don't record it anywhere. So your amount will be 110 into 100, 11,000. 110 into 100, 11,000. Okay, investment in shares to bank. 6 लोग ने सबमिट नहीं किया. मेरे को पर्सनल चैट पे होमवर्क चाहिए अभी, जस्ट आफ्टर द लेक्चर. तो फिर छोड़ दो, फिर लेक्चर भी मत आओ, घर पे ही बैठो. प्रैक्टिस तो करने का नहीं है ना, खाली कॉपी तो करना है. नोट्स मिल जाएगा फ्रेंड लोग से, तो क्या जरूरत है. खुद खुद नहीं करेगा ना, खुद का कुल्हाड़ी मार रहा है तुम पैर पे एकदम. Even the simplest of the paper you won't be able to solve. So Maya also. टाइमिंग नरेशन के साथ कितना टाइम में हो रहा है, सम डिफिकल्टी लेवल क्या है, खुद से करेगा मालूम पड़ेगा. Unless and until you solve on your own, nothing is going to happen. बंसी वीरती.
Sir, हाँ बोलो. sir, I was not there for 2 days. That's why I didn't, Thursday, Friday दोनों मिल रही थी. फ्राइडे को मेरा लेक्चर थोड़ी होता है, थर्सडे को एक लेक्चर हाँ मिस बट किया. आई टू तो फ्राइडे को होमवर्क सेंड करने का था ना इसलिए. बट वीडियो था ना. थर्सडे यू वर एब्सेंट, फ्राइडे तो यू वर देयर एट होम. No, both days I was out. बोथ डेज यू वर आउट. Yeah. Submit it immediately after lecture. Sir, even Sir, I have I was out for 2 days function. जो भी है, जिसका जो फंक्शन है ठीक है, बट आज मेरे को कंप्लीट करके आज ही सेंड करो. हाँ सर. Send it immediately. Yeah. Yes, sir. Don't practice, you will screw up yourself badly. Accounts and maths is all about practice. रिटर्न प्रैक्टिस नहीं करेगा ना, पढ़ पढ़ के वो थियरी नहीं है, मिस्टेक होगा ही, 100% मिस्टेक होगा. इतना भी सम ऐसा ऐसा देखेगा ना, वो देख के लिखने में बहुत फर्क होता है. Also, semester papers, those who have scored less, they will have to rewrite the semester paper again. I'll send you the names in the group today. Submit it by Monday evening. Sir, scored less मतलब कितना marks? I'll send around 10-12 students. And Tuesday onwards, we have same time, huh? 8 to 9:30 and 9:45 to 11:50. Have to come in your own batch. सर इन द 14 सम जो डिस्काउंट है उसमें पॉइंट में आ रहा है तो उसको राउंड ऑफ करके लेंगे तो चलेगा. 14th. 11th में जो आ रहा है ना वो पॉइंट में आ रहा है. कहाँ पॉइंट में आ रहा है? पॉइंट में थोड़ी आ रहा है. 87.5 आ रहा है सर. 350 नॉर्मल है. 6650 3325 3325. What point? Yes. No point. Point ही नहीं हुआ. कैलकुलेशन करो बराबर. Sir, in the 11 transaction, it is not cash and bank. It is partly on cash and partly on credit. अच्छा ओके. पार्टली कैश पार्टली क्रेडिट. ओके ओके ओके. सॉरी. वेट. तो फिर एक मिनट. हाँ, 7,000 पे 3,500 3,500 एंड उस पे 175 तो 3,325 आएगा. 3,325 इन द कैश
part. That's it. बाकी तो credit part and discount will go in note. CD and discount अपना CD and the credit sale will both go in note. CD and credit sale will both go in note. Credit sale will be recorded in sales book and CD will be recorded in journal profit. Partly cash, partly credited. Okay. Sir, which account to use for interest on overdraft? Interest on overdraft, same account. Same interest on overdraft. Sir, interest on overdraft is always through bank, right? Yes, interest on overdraft is always through bank. Interest on overdraft, bank charges, bank commission, ये सब बैंक के थ्रू होगा. So in 27th, we don't know debtor's name. We don't need it because it's our income. We need it for discount. 27th में तो डायरेक्ट हो जाएगा. 29th में लगेगा तुमको. उधर डेटर लिख देने का. कुछ नहीं दिया तो डेटर. Party's name is debtor. Sir, bank paid our telephone bill. Bank paid मतलब. So you wrote in cash. Sir, on 17th, it will be on the bank side because it's Yeah. 17th it is cross check. Yeah. Sir, in 25th, it is given that deposited the. 25th it is given. गोविंद वाला है. गोविंद वाला is on 6th. वो वाला डिपॉजिट. ये तो बराबर बैंक में ही जाएगा ना. 17th. 20th वाला बैंक पेड तो बैंक कॉलम. 21st वाला बैंक चार्ज so buy interest on overdraft bank column. Paid by check to Urmila so buy Urmila bank column. Deposited into check the check received so bank to cash bank column 13 to 50 and buy bank cash column 13 to 50. This is the check deposit contract.
Now, very important entries from 27th onwards. 27 and 29, both are very important. All of you look at the entry number 27. यहाँ तक मिला पहले सबको? Any doubt till this point? यहाँ तक comfortable all of you, all the entries? अभी 27th देखो क्या दिया है. Received a bearer check of 3460 for rent, which was deposited into the bank. What will be the entry for this? Bank to rent. Bank to rent, cash to rent. Bank Bank to rent. Bank to rent. Because the check is deposited on the same day. So bank to rent. So to rent in the bank column, to rent in the bank column, it will be 3460. To rent in the bank column 3460. This is check received and deposit. Check received and deposited. Okay. To rent bank column 3460. Now, what is happening on 29th? Bank informed that the check received for rent was dishonored. Dishonor का 4 steps याद है आपको? Opposite side. So which side you will record the dishonor part now? Credit. Credit. Payment side. By party's name. Can I write by rent? Debtor account. हाँ. By debtor account. पार्टी का नाम तो दिया नहीं है, तो क्या लिखने का? By debtor लिखने का. Why by debtor? Why not by creditor? Because he has to pay rent to us. Because he has to pay us. So that's why I'm writing by debtor. Okay. If we would have given someone some money, it would have been to creditor. Got it? But party का नाम ही होना चाहिए. हाँ? Don't write by rent, because if you write by rent ना, it means that you are paying rent. Rent to bank. Are you paying rent? No. Rent का जो चेक आया था ना, वो बाउंस हो गया, मतलब वो चेक कैंसिल हो गया. तो अभी डेटर जो भी बंदा है, तुम्हारा टेनेंट है, उससे पैसा लेना बाकी है. That tenant is your debtor. That's why you are debiting his account. फिर 1 महीने बाद या 10 दिन बाद जब उसने पैसा दिया, तब you will write cash to tenant, cash to debtor. Okay. Rent already credit कर देने का, income generate हो चुका है, पैसा मिलना बाकी. तो debtor से पैसा मिलना बाकी. Dishonor entry will always have party's name. Is it clear? So to rent का by rent नहीं, by debtor. नाम दिया तो नाम अजय विजय संजय, नाम नहीं दिया है तो बाय डेटर अकाउंट. समझा? डेटर से पैसा लेना बाकी. मुझे एक बात बोलो, अब ये डेटर 10 दिन बाद जब पैसा देगा तो व्हाट एंट्री विल बी पास? कैश टू डेटर या बैंक टू डेटर? विल यू राइट अगेन कैश टू रेंट? नो, रेंट इज ऑलरेडी क्रेडिट. रेंट हैज बीन आवर इनकम ऑलरेडी. अभी डेटर का गलती था, डेटर से पैसा लेना बाकी है. इज इट क्लियर? So opposite side, party's name, that is by debtor. नाम नहीं दिया तो debtor, creditor. Reverse the discount. Was there any discount in the initial transaction? No. And same column. So tell me which column, cash or bank? Which column? Bank. Bank column. Because यहाँ पे देखो rent already तुमने check bank में deposit कर लिया है. Can you see that? So it will be in the bank column. 3460. 3460 in the bank column. 3460 in the bank. Did you all get this part now? Dishonor. Opposite side, party's name, reverse the discount, same column. Same column मतलब जब तक deposit नहीं किया तब तक cash, deposit कर दिया तो bank. Okay. That's it. The last one is simple. Paid life insurance. What is life insurance? Drawing. By drawings. कैसे पे किया? Cash में दिया हुआ है. It is 4250 cash column. वो लोग ने दिया तो अपना दिमाग मत वापरो. Otherwise, insurance के लिए we use bank. And electricity bill by check. So by electricity charges या electricity account, bank column 7004. Okay, by drawings and by electricity 30th April. That completes the problem. Tell me the total of cash. Anyone has done it? 72,575. 72575 is the total. 72575. Balance of cash. Anyone has calculated balance? 31,335. 29,330. अरे कैश का बैलेंस कितना आ रहा है? 29,335. I'm getting 31,335. Yeah, even I'm getting 31. 31,335. Check. 23, 36, 36.
47, 41, 41 to 50, 41 to 50. हाँ तो बराबर है 31 आएगा 31 335 आएगा. Cash always your debit side will be greater. Is that clear? Cash debit side बढ़ा है छोटू क्रेडिट को माइनस करो बैलेंस मिल गया. What about bank? जरूरी नहीं है डेबिट बढ़ाओ कोई भी बढ़ा हो सकता है. Debit check. side is greater. 45710. Which side is greater? Debit. अच्छा डेबिट ही बढ़ा रहा है पक्का चेक कर लो. 20 45710. 9 39 42 45710. Please check 45710. Is that the total of bank? Debit is greater 45710. Don't copy blindly. Please check. 1080 is the bank. Debit is coming 4467. 45710 only. 45710 ना राइट है ना. विदुषी हमेशा कैलकुलेशन एरर हो रहा है चेक करो. 45710 and balance of bank is 1080. Is that right? Balance of bank is 1080. Yes, sir. Yes, sir. Okay. And what will you do? ये खत्म नहीं हुआ इसको कैरी फॉरवर्ड करना है यहाँ पे. ये डेट होगा 30th April. Bring it down as what? ये क्या बन के आ जाएगा यहाँ पे? To balance BD. Cash column 31335. Bank column 1080. Date 1511. 1511. That completes the problem with the note. I think 3 notes you should have. Transaction number 3, 6 and 11. 3, 6 and 11 का 3 notes आना चाहिए. Okay. Sir, can you zoom the balance? Balance 31335 and 1080. 31335 and 1080. Check, verify. Stop at this point. Okay. Homework, those who are yet to submit, 6 people submitted today itself. बाकी homework आपको आ जाएगा. You have to submit by Monday evening. Okay. And papers, जिसका कम marks आया semester, again Monday evening on personal chat. We meet on Tuesday, same time, respective batch, 8 o'clock to 9:30 and 9:45 to 11. Still, if you have any doubts, you wait. Otherwise, bye-bye. Bye. Bye, sir. Thank you, sir.